Hello dear students, hope you all are fine. So today date is 18 August, day Tuesday, your class 5th, subject computer, chapter number 6 internet. This is the revision video of chapter number 6. Your test of computer is on 19 August, means tomorrow. So let's start. Let's start with question answers. Question number 1 is, what is an internet? Give the name of first internet. इंटरनेट क्या होता है और हमारा फर्स्ट इंटरनेट कौन सा था? इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क. फर्स्टली वी विल राइट द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट, दैट इज इंटरनेशनल नेटवर्क. मीन्स ऑल द नेटवर्क्स कनेक्टेड टू ईच अदर इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड. It is a network of networks, means many networks are connected to a single network spread around the different parts of worlds, and these many networks are spread around it to the different parts of the world. The name of first internet is ARPANET. ARPANET, ARPANET. What do you mean by computer network? Now what is a computer network? When two or more computers are connected to each other to share the information and resources is called computer network. जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड होते हैं अपनी इंफॉर्मेशन या अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, तो उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं. नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 4 uses of internet. You have to write the different uses of internet. You can write any uses of internet. Like first is searching, shopping, chatting, playing games, job search, entertainment, and many more. Searching, we can search on any topic regarding our education, regarding our studies. Okay. Shopping, we can do online shopping on internet and we used to save our time. Chatting, we can chat with our friends, we can send messages to our friend using internet. Playing games, we can play online games which are free of cost, जिनमें पैसे नहीं लगते हैं. तो अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट होगा तो आप उन गेम्स को डाउनलोड कर सकते हो. आप एंटरटेनमेंट के लिए यू कैन वॉच मूवीज, यू कैन परचेज ऑनलाइन टिकट्स एंड ऑल. Next is, what are the basic requirements for the internet connection? Today we are using internet, so we are having an ISP. हम लोग आज के टाइम पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. लाइक मोस्ट पॉपुलरली वी आर यूजिंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज Jio. Means about 80% of people are the Jio users. So the basic requirements for an internet connection is a computer system. आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम ज़रूर होना चाहिए. अ मॉडेम, टेलीफोन लाइंस, अगर आपका कनेक्शन वायर्ड है तो उसके लिए टेलीफोन लाइंस. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर विच विल प्रोवाइड यू इंटरनेट सर्विस. सम आर BSNL, Airtel, MTNL and so on. And a web browser, means a web app like Internet Explorer, Google Chrome and so on. So these are the basic requirements for an internet connection. Now what is an email? Write its 2 features. You have to tell what is the email and 2 features of that email. Email stands for electronic mail. Firstly we will write the full form of email, that is electronic mail. It is used for sending and receiving messages from any part of the world. किसी को मैसेज भेजने के लिए या किसी का मैसेज रिसीव करने के लिए हम ईमेल को यूज़ करते हैं. फीचर्स ऑफ ईमेल आर, इट इज़ वेरी फास्ट, इट इज़ सिंपल, और यू कैन राइट इट इज़ हैविंग अटैचमेंट फैसिलिटी. ईमेल इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मेल्स. इट इज़ वेरी इजी टू use, very simple to use. Next is, what do you mean by email address and password? Now what is email? Email address is a unique identifier for the email account. Means if you are having an email account and your friend is also having an email account,
then you both are having a different email address, so that people can identify both of you differently. आपके पास भी आपका अकाउंट है, आपके फ्रेंड का भी अकाउंट है ईमेल, तो दोनों का डिफरेंट होगा ईमेल एड्रेस. क्यों? ताकि लोग को आइडेंटिफाई कर सके. सो email address is the unique identifier for the email account. It is used for both sending and receiving emails messages over the internet. Now email address has 3 parts. Suppose your email address is tom@gmail.com. So this Tom is your name. ये वो नेम होगा जिससे आपका अकाउंट बना हुआ है, which is known as user name. This is @ symbol and this is domain name. Username, @ symbol and domain name. This symbol is called @ symbol. Now what is password? Password is a unique key that opens email ID. जब भी हम अपना ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं तो उसके बाद पासवर्ड टाइप करते हैं, तभी हमारी ईमेल आईडी या ईमेल आइडेंटिटी खुलती है, ओपन होती है. विदाउट इनपुटिंग पासवर्ड ईमेल कैन नॉट बी ओपन. तो पासवर्ड को बिना यूज किए हम अपना ईमेल नहीं खोल सकते. सम फुल फॉर्म्स आर देयर. फर्स्ट इज इंटरनेट. इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क. ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. A for advanced, R for research, P for project, A for agency, and NET, net for network. Modem, modulator, demodulator. MO, modulator, DEM, demodulator. ISP, internet service provider. www, world wide web. URL, uniform resource locator. email, electronic mail. BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड. MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड. Dash is known as the network of all networks. So internet is the network of all networks. This symbol is pronounced as @ symbol. Dash is a set of manners that we use while using the internet. एक set of manners जो हमें follow करना चाहिए इंटरनेट को यूज करते टाइम, that is called netiquette. Dash is the internet service provider, BSNL. A dash is a device that connects your computer to a standard telephone line, that is modem. Dash is a way of communication. Email is a way of communication. Thank you.